So today we will begin the revision of atomic structure. Now these are the few points of the atomic structure which we will cover in this lecture. Rutherford's atomic model, about this you have heard. Then what were the drawbacks of the Rutherford's model, and then third is the Bohr's atomic model for hydrogen atom. So see here, in 1897 में क्या है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson, that you know. In 1906, what will be the distribution of the protons and electrons in an atom? It's one experiment was conducted by the Rutherford. Rutherford had conducted one experiment regarding the atomic structure, means किस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन एन एटम. बिफोर दिस देयर वाज वन Thomson model. According to the Thomson model, electrons and protons are embedded throughout the whole volume of the atom. थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. और कैसे, जैसे कि क्या होता है, जो एक हम तरबूज देखते हैं तो उसमें अगर हम रेड कलर का जो पार्ट है उसको हम रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो जो उसके जो ब्लैक कलर के बीज हैं जिनको हम बीज कहते हैं वो क्या हैं, दे आर लाइक द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इन द रीजन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. बट immediately this model was discarded because this model was not able to explain that how these negatively charged electrons are separated by the isolated from the positive charge. ये कैसे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रीजन से आइसोलेटेड है, because we know that when both will come in contact, what will happen, they will neutralize to each other. So this model was soon discarded. So in 1906, Rutherford had conducted an experiment. Yes. So according to Rutherford's experiment, he bombarded the alpha particle on a photographic plate directly. There was a photographic plate and alpha particle were allowed to fall. Alpha particle means helium nucleus. We know that what are the alpha particles? These are the helium nucleus, and these alpha particles were allowed to fall over the photographic plate. So what was found? What was the observation of Rutherford? He found an intense spot. एक क्या है, शार्प स्पॉट यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर मिला. But he found that when a metallic plate is kept in the path of the alpha particle, मतलब जब क्या है, अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ रहे थे तो यहाँ पर एक पॉइंटेड स्पॉट जो कि बहुत ही ब्राइट था वो मिल रहा था. But when a metallic plate was kept on the path of the alpha particle, so he found that there is a diffused spot. This spot has become diffused. So this observation he had explained that it is because of the scattering of alpha particle by the metal foil. Scattering of alpha particle by the metal foil. But by this experiment he could not conclude anything about the structure of atom. Then a similar experiment was done by Geiger and Marsden in 1909. Geiger and Marsden had conducted a similar experiment regarding the structure of atom, and that was the alpha particle scattering experiment. Alpha particles were allowed to fall on a metal foil, and this is a metal foil. This is some alpha particle source here. Alpha particle are allowed to fall on this. This is a gun which is firing the alpha particles, and these alpha particles were
their number of alpha particles going in the different directions were counted by the scintillation counter. scintillation counter, scintillation क्या है, एक टाइप की ग्लो है। जैसे जुगनू चमकता है तो उस तरीके से वो scintillation प्रोड्यूस होगा, और कितनी बार वो चमका तो वो उसको काउंट कर लिया जाता था। सो अल्फा पार्टिकल्स वेर अलाउड टू फॉल ऑन द मेटल फॉयल, ऑन द गोल्ड फॉयल, एंड देन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस वेर काउंटेड बाय द scintillation काउंटर। मतलब कितने अल्फा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, कितने अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गए, मीन्स कितना डेविएट कर गए अपने पाथ से, इतना थीटा। ऐसा यहाँ पर कितना डेविएट करे, नो डेविएशन। इट्स क्लियर। सो इट वाज काउंटेड बाय द scintillation काउंटर। सो ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इधर पास्ड अनडेविएटेड आर सफर्ड ए वेरी स्मॉल एंगल स्कैटरिंग। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल या तो सीधे चले गए या क्या है, उनमें स्कैटरिंग हुई कितने डिग्री की, 1 डिग्री की। मतलब क्या है, वो अपने पाथ से 1 डिग्री या उससे कम एंगल से डेविएट हुए। इट्स क्लियर। सेकेंडली ही फाउंड दैट देयर वेर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अबाउट 1 in 10,000। 1 in 10,000 मीन्स जब 10,000 अल्फा पार्टिकल्स इस पर बम्बार्ड किए जा रहे हैं ओवर द गोल्ड फॉयल, when the scattering of 10,000 alpha particles is taking place through the gold foil, then only 1 alpha particle is suffering a very large angle scattering. Very large angle scattering means deviating from its original path by 90 degree or by 180 degree. It's clear. These were the two observations of the Geiger and Marsden when they have conducted the experiment of alpha particle scattering experiment on the gold foil. When alpha particles were allowed to fall on the gold foil, then he found that most of the alpha particles passed either undeviated or suffered a very small angle scattering. It is nearly 1 degree or less. And second observation was very few alpha particles, about 1 in 10,000 suffered a very large angle scattering. This large angle scattering could not be explained by the prevalent ideas about the atom at that time. उस समय जो मतलब थ्योरीज थी उनकी बेसिस पर इनको क्या है, एक्सप्लेन नहीं किया जा पाया at 1909. Then this experiment was further reconducted by the Rutherford in 1911 and he found the similar results. Similar observations were recorded by the Rutherford in 1911. Similar observations means the observations which were found by the Geiger and Marsden in 1909, and in Rutherford had explained these observations. These observations were explained by the Rutherford. According to the first observation, what was the Rutherford's theory? So Rutherford की theory क्या थी? पहला observation क्या था? Most volume of an atom is, most of the alpha particle pass undeviated. It means most volume of an atom is empty. मतलब ये ऐसा नहीं है जैसा थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटॉमिक वॉल्यूम. Rutherford had concluded from the first observation that most of the alpha particle either passed undeviated or suffered a very small angle scattering. From this he had concluded that most volume of an atom is empty. Most volume of an atom is, ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऑफ एन एटम पढ़ा है कि नहीं? एम्प्टी. क्योंकि अगर एम्प्टी ना होता तो क्या होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता.
Secondly, from the large angle scattering. Large angle scattering says that the sum of the very few alpha particle, about 1 in 10,000, suffered scattering by 90 degree or 180 degree. 180 degree means retraced their path. Retraced their path means this is the metallic plate, alpha particle goes in this direction and then they come back. So he explained that since the alpha particles are positively charged, as we know that alpha particle are what? This is the helium nucleus. Helium nucleus, and helium nucleus is having how much positive charge? It is consisting 2 protons and 2 neutrons. It is clear? What is the amount of charge on helium nucleus? It is 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. So it can be scattered only when the scattering body is also positively charged. Scattering body is also positively charged. So this Rutherford had concluded that since the alpha particles are positively charged, therefore the scattering object, scattering body, because of which these alpha particles are scattered in the different directions, must be positively charged. And this is concentrated since very few alpha particles are retracing. Very few alpha particles are retracing or deviating by large angle. So he had concluded that this amount of this positive charge, this scattering body must be situated in a tiny volume. ये पूरे में स्प्रेड नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्प्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पूरे में स्प्रेड होगा देन व्हाट विल हैपन, द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. Since very few alpha particles are suffering large angle scattering, therefore this positive charge must be situated in a tiny volume. एक क्या है, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में situated. And the alpha particles which are going close to this, they are suffering large angle scattering. This you have seen this diagram. ये तुमने डायग्राम देखा होगा ना, देखा है कि नहीं? Alpha particles which are going to this, going closer to this positively charged body within an atom, they are suffering large angle scattering. Which are going near to it, they are suffering large angle scattering. And which are going in the straight of this, they are retracing their path. वो अपने पाथ को क्या कर रहे हैं? रिट्रेस कर रहे हैं. आए समझे? So he named this पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एज द न्यूक्लियस. उन्होंने इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या नेम किया? न्यूक्लियस नेम किया. दैट दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बिकॉज ऑफ विच अल्फा पार्टिकल्स आर सफरिंग लार्ज एंगल स्कैटरिंग विच इज कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट होल अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. सेकेंडली ही हैड कंक्लूडेड दैट दिस इज वेरी मच मैसिव. क्यों बहुत अधिक मैसिव है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी एनर्जेटिक हैं, बट जब ये इससे कोलाइड करते हैं या इसके पास में जाते हैं तो ये अपने प्लेस से नहीं डिस्प्लेस होता. ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके से हो कि ये न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, वो क्या कर दें, इसको खिसका दें. ये ऐसा नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा था? Because the angular distribution of the alpha particles in the different direction was fixed. अगर ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता then angular distribution will not remain fixed. So he had concluded that this is very much massive as well as it is containing whole amount of the positive charge. So what was the first conclusion? First conclusion was this, that most volume of an atom is empty. Number 2, the scattering of alpha particle is taking place because of a body which is situated within the atom, which is positively charged and consisting almost whole mass of an atom. Whole mass of an atom. Number 3, Rutherford had calculated the number of scattered alpha particles in the different directions. By applying the Coulombian force of repulsion, he told that the
scattering of alpha particles by the nucleus takes place because of the Coulombian force of repulsion. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है. न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड. So he told that this scattering of alpha particle by the nucleus is because of the Coulombian force of repulsion, and by using this thought he had found the number of alpha particle scattered in the different directions. Number of alpha particle scattered in the different directions, it is given by this, means n is proportional to 1 upon sine to the power 4 theta by 2. What is theta? It is the direction in which alpha particle is scattered after colliding with the atom. It's clear? Means suppose this is the metal foil, alpha particles are going in this direction, this is the original direction, but they scatter in this direction, this is the theta. And it was found that this relationship was in the accordance of the experimental result. This result was obtained on the theoretical basis. ये कैसे derive की गई थी, deduce की गई थी? Theoretically deduce की गई थी. And it was found that it was matching, it was in accordance with the results of the experimental results of Geiger and Marsden. मतलब ये क्या है, जो experimental results थे उनसे ये मैच कर रही थी. आए समझे? तो यहां से ये कंक्लूड हो गया दैट द कूलम्बियन फोर्स इज एप्लीकेबल एट द एटॉमिक डिस्टेंसेज. कूलम्बियन फोर्स इज एप्लीकेबल एट द एटॉमिक डिस्टेंसेज. सो दीज वेर द 3 कंक्लूजन्स फ्रॉम द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. what was the first conclusion? Since most of the alpha particles either passed undeviated or suffered a very small angle scattering, so from this he had concluded, Rutherford had concluded that most volume of an atom is empty. It's clear. Number 2, since the alpha particles are positively charged and therefore the body which is responsible for the scattering of alpha particle must also be positively charged, as very few alpha particles are suffering large angle scattering. So from here he had concluded that the most total positive charge of an atom is concentrated in a tiny volume which is consisting almost whole mass of an atom, and this body was named as nucleus. इसको क्या नेम किया गया? न्यूक्लियस नेम किया गया. नंबर 3, he had concluded that the scattering of alpha particle is taking place because of the Coulombian force of repulsion, and theoretically he had deduced this relationship that the number of alpha particles scattered at an angle theta is proportional to this, n proportional to 1 upon sine to the power 4 theta by 2. This theoretical result was matching with the experimental results obtained by the Geiger and Marsden. So from there it was concluded that this Coulombian force is applicable at the atomic distances also. Atomic distances means distance 10 to the power minus 10 meter. That is 1 angstrom. It's clear? These were the 3 conclusions. Now, Rutherford's atomic model. On the basis of the Rutherford's alpha particle scattering experiment, Rutherford had given proposed a Rutherford's atomic model. According to the Rutherford's atomic model, atom is consisting a nucleus. Atom is consisting a nucleus which is consisting whole positive charge as well as almost whole mass of an atom. Almost whole mass means 99% mass of an atom. And now you know that since the electrons are lightest particles, उनका मास कितना है इलेक्ट्रॉन का?
1/1837 ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है, 10⁻27 kg. सो मोस्ट मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू न्यूक्लियस. What was the first proposition of the Rutherford's atomic model? That atom is consisting a nucleus which is consisting whole amount of positive charge as well as almost whole mass of an atom, and this nucleus is situated at the center of atom. ये nucleus क्या है, center of atom पर situated है. इसका वॉल्यूम क्या है, बहुत ही कम है. ये फर्स्ट प्रोपोजिशन थी. सेकेंड वाज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ ऑल प्रोबेबल रेडियाई. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ ऑल प्रोबेबल रेडियाई. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं. इन ऑल प्रोबेबल रेडियाई मतलब उनकी रेडियस कुछ भी हो सकती है. The necessary centripetal force required for moving in the circular orbit, it is given by the Coulombian force which exists between nucleus and electron. आए समझे, क्योंकि पहले ही उन्होंने एक थ्योरी अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया था दैट एटॉमिक डिस्टेंसेज ओवर द एटॉमिक डिस्टेंसेज Coulombian force is applicable. So from here he had concluded that the necessary centripetal force, if we assume that the mass of electron m and it is moving with the velocity v, its radius is r, then how much will be the centripetal force, कितना होगा, mv square upon r. It will be given by the Coulombian force of attraction which exists between this and this. अगर हम एटॉमिक नंबर ले लें z, तो एटॉमिक नंबर z है तो कितने प्रोटॉन्स होंगे z, तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा z इंटू ई. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 Ze इंटू ई अपॉन r स्क्वायर. दिस वाज द सेकेंड प्रोपोजिशन. इट्स क्लियर, ये सेकेंड प्रोपोजिशन थी. थर्ड क्या था, सिंस alpha particles are moving in circular orbits of all probable radii, therefore they will emit a continuous spectrum. वो क्या है, एक continuous spectrum emit करेंगे. आए समझे. So these were the three propositions of the Rutherford's atomic model. What was the first? That atom is consisting a positively charged body called the nucleus situated at the center of atom whose volume is very very small, which is consisting almost whole mass of an atom. Number two, electrons are revolving around the nucleus in circular orbits of all probable radii, and the necessary centripetal force will be given by the Coulombian force. But what was the drawback of the, and number three was that the classical laws means Newton's laws, classical laws of mechanics, classical laws of electrodynamics. electrodynamics का मीनिंग क्या है, dynamics means what, pertaining to motion, electro means charged particle का, motion of charged particle. It's clear. Classical laws means Newton's laws. So third was classical laws of electrodynamics are applicable for about the motion of electron around the nucleus. यहीं पर क्या है, रदरफोर्ड से गलती हुई थी. उनके रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, because the classical laws of electrodynamics says, classical laws means Newtonian's laws. It's clear. Electrodynamics means dynamics of the charged particle, and according to this every accelerating or deaccelerating charged particle emits the energy, radiates the energy. कोई अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट हो रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब अपनी एनर्जी क्या है, लूज करेगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है,
चक्कर लगा रहा है, इसमें किस टाइप का एक्सीलरेशन होगा, कैसा एक्सीलरेशन होगा? कुछ सुना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। सिंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, देयरफॉर इट possesses द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। According to the classical laws of electrodynamics, every charged particle which is having a accelerated or deaccelerated motion will radiate the energy, and when it will radiate the energy, what will happen? Its energy will become smaller and smaller. When energy will become smaller and smaller, what will happen? Its path around the nucleus will become smaller and smaller, and ultimately it will fall into the nucleus and destroying the existence of atom. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज, एक दूसरे को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, विच डू नॉट टेक प्लेस। एक्चुअली में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अगर इसको रख दे चाक के पीस को तो 10 साल बाद भी आके अगर हम देखेंगे तो ये इसी तरीके से रहेगा, इसके एटम्स का कोई भी डिके नहीं होगा। ऐसे सो इस बेसिस पर क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। आए समझे? सो देयर वाज वन मोर बेसिस, सिंस Rutherford had proposed that the atom will emit the continuous spectrum, but it was found in case of the hydrogen that it is emitting the discrete spectrum. Discrete spectrum मतलब जो ये एनर्जी इमिट कर रहा है वो डिस्क्रीट लाइंस हैं। सो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मेन चीज़ें ये थी, रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी ये थी। ड्रॉबैक क्या थी? सिंस इलेक्ट्रॉन is moving around the nucleus, therefore it has a centripetal acceleration, and according to the laws of the electrodynamics, when an accelerated charged particle or deaccelerated charged particle radiates the energy, therefore electron will lose its energy, its orbit will become smaller and smaller, and ultimately it will fall into the nucleus, and the atom's existence will be destroyed, which never take place. It's clear? So from here, this Rutherford's atomic model was discarded. It's clear? Then after that, there was the Niels Bohr's model, Bohr's atomic model for hydrogen atom. And this Bohr's atomic model was only for hydrogen atom. मतलब ये केवल हाइड्रोजन के एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाया। As you know that in hydrogen atom there are how many protons in the nucleus? 2 or 3? Asita? 2. Tell loudly. हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0 प्रोटॉन। तेज आवाज में बोलो। तो फिर 2 क्यों बोल रही थी? ये असिता बोल रही थी। हाइड्रोजन एटम इज हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इट्स क्लियर? तो नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, नील्स बोर, पूरा नाम ये था। नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया फॉर हाइड्रोजन एटम। ही रिटेन्ड ऑल द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। Essential features of the Rutherford's atomic model, that atom is having a nucleus situated at the center of atom, having a very small volume and consisting almost whole mass of an atom, and electrons are revolving around the nucleus. ये 2 चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की। Rutherford had proposed an atomic model for hydrogen atom. He retained all the essential features of the atom proposed by the Rutherford. Essential features of the atom proposed by the Rutherford, that atom is consisting a positively charged body
consisting almost whole mass of an atom and whole positive charge of an atom situated in a tiny volume at the center of atom. This positively charged body was named as nucleus, and electrons are revolving around the nucleus. But besides this, he had also proposed that besides the classical laws, quantum laws are also applicable for the motion of electron around the nucleus. मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस केवल क्या है, क्लासिकल लॉज से ही नहीं गवर्न होता है, इट इज आल्सो गवर्न्ड बाय द क्वांटम लॉज. मीन्स ही हैड यूज्ड क्वांटम मैकेनिकल लॉज. क्वांटम मैकेनिकल लॉज for the motion of the electron around the nucleus. About the motion of electron around the nucleus, he used quantum mechanical laws. Means besides the classical laws, he also used the quantum laws. Now he had proposed 4 postulates. So what was the first postulate? Postulate 1. It was the stability of atom. Stability of atom. According to the Rutherford, electrons are revolving around the nucleus in certain closed orbit. उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, क्लोज्ड ऑर्बिट. Electrons are revolving around the nucleus in certain closed orbit, and as long as they move in these closed orbit, they do not radiate out any energy. वो जब तक इन क्लोज्ड ऑर्बिट में मूव करेंगे, वो क्या है, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे. जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल प्रोबेबल रेडियाई. इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन क्लोज्ड ऑर्बिट्स, नॉट इन ऑल पॉसिबल क्लोज्ड ऑर्बिट्स. इट्स क्लियर. एंड एज लॉन्ग एज दे मूव इन दीज क्लोज्ड ऑर्बिट, दे डू नॉट रेडिएट आउट एनी एनर्जी. एंड व्हेन दे डू नॉट रेडिएट आउट एनी एनर्जी, व्हाट विल हैपन, देयर एनर्जी विल नॉट बी लॉस्ट एंड दे विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. नाउ व्हाट वाज द सेकंड पोस्टुलेट? Second postulate was regarding the dynamics of electrons. Dynamics of electrons. So he proposed that when electrons revolve around the nucleus, then necessary centripetal force is given by the Coulombian force of attraction existing between the nucleus and electron. अब देख लो कितना होगा सेंट्रिपिटल फोर्स. अभी हमने बताया था v स्पीड से जा रहा है, मास m है, रेडियस क्या है, r है. व्हाट विल बी द सेंट्रिपिटल फोर्स? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. इस पर चार्ज क्या है, E. 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. It is represented by the symbol E. So it is having this charge E. This is also having this charge E. So E into E upon R square. This was the dynamics of electrons. About the dynamics of electrons means about the motion of electrons. He told that the electrons are revolving around the nucleus, and the necessary centripetal force is given by the force of attraction which exists between the electron and nucleus. This was this law was also given by the Rutherford. यही चीज रदरफोर्ड ने भी बताई थी. थर्ड was about the quantization condition, quantum condition. Third postulate, postulate 3. This was introduced by the Niels Bohr, quantum condition.
Now, what was the quantum condition? Rutherford had proposed that electrons are moving around the nucleus in circular orbit of all probable radii. Niels Bohr had proposed that electrons are revolving around the nucleus in some permitted orbits. इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड केवल कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाते हैं. They cannot revolve in circular orbits of all probable radii. It's clear? And what were those permitted orbits? Permitted orbits are those in which the angular momentum of electron is integral multiple of whole number multiple of h upon 2 pi. So देख लो, इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका कितना एंगुलर मोमेंटम होगा. सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr. इट्स क्लियर? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी. और इस मोमेंटम का इसके अबाउट मोमेंट क्या होगा? जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते तो क्या करते? F इंटू आर. तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P इंटू आर, दैट इज mvr. So this should be the integral multiple of, integral multiple means whole number multiple. It's clear? nh upon 2 pi. What was the quantum condition? Third postulate was regarding the quantum condition, and according to this, electrons cannot revolve in circular orbits of all probable radii. They can revolve only in some permitted orbit in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. आए समझे? मतलब क्या है? अगर हम ये पूछें, जब इलेक्ट्रॉन के सेल में चक्कर लगा रहा, के सेल सुना होगा, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता? तेज आवाज में बोलो. 1. n इक्वल्स टू 1. इट्स क्लियर? सो जब इलेक्ट्रॉन के सेल में चक्कर लगा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h upon 2 pi. जब वो L सेल में चक्कर लगाएगा, L सेल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी. नॉर्मल टेम्परेचर में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? के सेल में रहता है. आए समझे? जब वो क्या है? एल सेल में जाएगा तो वो उसकी क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन द एल सेल? कितना होगा? h upon pi. 2 into h upon 2 pi. 2 कैंसिल, h upon pi. ये क्वेश्चन बोर्ड में आया. इट्स क्लियर? एंड फोर्थ वाज, what was the fourth postulate? Bohr's frequency condition. This is the Bohr's quantum condition. Postulate 4. Bohr's frequency condition. So see here, according to the Bohr's frequency condition, when electron moves from one orbit to another orbit, जब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है. सपोज वो क्या है? इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जा रहा, के सेल से एल सेल में जा रहा, के सेल से एम सेल में जा रहा. इट कैन डू सो ओनली व्हेन it gains a specified amount of energy. It's clear? It can go into the higher orbits by gaining the energy. Similarly, when it is transiting from higher orbit to the lower orbit, किसी higher orbit से n सेल से l सेल में आ रहा, n सेल से k सेल में आ रहा, then it will lose the specified amount of energy. और कितनी एनर्जी गेन करेगा या कितनी एनर्जी लूज करेगा? इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी possessed by the electron in those cells.
मतलब क्या है, हमने एक सिंपल सा वो लिया है कि के सेल में जब इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, 2 जूल है, ये तो हमने बहुत अधिक ले ली। और एल सेल में है कितनी है एनर्जी, 8 जूल है। तो वो के सेल से एल सेल में तभी जा सकता है व्हेन इट गेन्स द 6 जूल एनर्जी। अगर सपोज क्या है, के सेल के इलेक्ट्रॉन को 5 जूल एनर्जी मिल जाए, 5 जूल्स एनर्जी मिले, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो के सेल में ही बना रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वहां से चल के वो उसमें आ जाए, बीच में आ जाए, के और एल सेल के बीच में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आए समझ, इट कैन ट्रांजिट, इट कैन मूव फ्रॉम के सेल टू द एल सेल, it can means electron can move from K cell to the L cell only after gaining the energy possessed by the energy difference of energy possessed by the electron in these cells. Similarly, when it move from L cell to the K cell, what will happen? It will radiate out 6 joule energy. ये जब 6 joule energy lose करेगा, then only it can reach into the K cell. So see here, according to the Bohr's frequency condition, when electron moves from one orbit to another orbit, then either it absorbs or it loses energy equal to the difference of energy possessed by the electron in those cells, and corresponding to which a frequency will be emitted, a radiation of a certain frequency will be emitted. It is given by ये क्या होगा, EI माइनस EF इक्वल्स टू H इंटू न्यू, H इंटू न्यू और HC अपॉन लैम्डा. नाउ यू कैन सी हियर, mechanical laws are applicable here, while quantum laws are applicable in these two. It's clear? So see here, once again you can see what was the Niels Bohr atomic theory for hydrogen atom. So what was the first point? Bohr had retained all essential features regarding the structure of atom as proposed by the Rutherford, And what were the essential features? That the atom is having a nucleus whose volume is very small as compared to the atom and consisting almost whole mass of an atom and whole positive charge, which is situated at the center of the atom. It's clear? And electrons are revolving around the nucleus in orbits of all probable radii. Niels Bohr had proposed some postulates. One was the stability of atom. What was the postulate regarding this about the stability of atom? उन्होंने एटम को स्टेबिलिटी कैसे दी? रदरफोर्ड के मॉडल में एटम क्यों नहीं स्टेबल था? क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था that motion of electron around the nucleus is governed by the classical laws. It is totally governed by the classical laws. And classical laws says that an accelerating or deaccelerating charge particle radiates the energy. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा. क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है. और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक क्षण ऐसा आ जाएगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगा, जो कि होता ही नहीं है. ऐसे तो यहीं से रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया था. इन्होंने क्या कह के स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी? दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन क्लोज्ड ऑर्बिट, एंड एज लॉन्ग एज दे मूव इन दीज क्लोज्ड ऑर्बिट they do not radiate out any energy. And why? Because the motion of electron around the nucleus is governed by the quantum mechanical laws. Means besides the classical laws, he had also used quantum laws to explain the motion of electron around the nucleus. यहाँ पर ये quantum law यूज किया. Now what was the second postulate? It was about the dynamics of electrons around the nucleus. It was similar to the Rutherford's proposition.
According to it, the necessary centripetal force required to the electron for moving around the nucleus, it is given by the force of attraction which exists between the बोलो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तुम लोग बोल ही, हम क्या यहाँ। व्हाट वाज द थर्ड? इट वाज द बोर्स क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स, एंड दीज permitted orbits are those in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, जहाँ h क्या है? वेरी गुड। h की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। देखो जब आता है तो आदमी अपने आप तेज आवाज में बोलता है ना, आए समझे? mvr equals to n into h upon 2 pi. What was the fourth postulate? It was regarding the Bohr's frequency condition. According to the Bohr's frequency condition, an electron can move from one orbit to another orbit after absorbing or radiating a certain fixed amount of energy. That certain fixed amount of energy will be radiated in the form of radiations of certain frequency, and it is equal to what? ये जो एनर्जी रेडिएट होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड इन द रेडिएशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? डिफरेंस ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय डिफरेंस ऑफ एनर्जीज विच इलेक्ट्रॉन्स हैव इन दोज ऑर्बिट्स। आए समझे? मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कब? जब इनर से आउटर जा रहा है, इस लोअर ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट में जा रहा, या रेडिएट करेगा जब हाइयर से लोअर में आ रहा। किस फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड इट इज इक्वल टू EI माइनस EF इक्वल्स टू H इंटू न्यू। Now on the basis of this we will deduce the certain relationship.